गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सिंगापुरियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसरो जो है वो 22 तारीख को सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो की सिंगापुर की टेलीओएस 2 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है यूजिंग PSLV। तो ये जो है थर्ड लॉन्च होगा इसरो का, जो कि कमर्शियल लॉन्च है। अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो आपके जो है प्लैनेट को, अर्थ को जो है ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस में डाली जाती हैं। सबसे पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्पुतनिक 1 थी, जो सोवियत यूनियन ने 1957 में डाली थी। 500 से 600 किलोमीटर जो है दूर उसको सर्विस ऑफ अर्थ से जो है वो रखा जाता है, ताकि वो ठीक से प्लैनेट अर्थ को ऑब्जर्व कर सके। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, कार्टोग्राफी, नेविगेशन, मिलिट्री यूज़ भी होता है इसका, स्पाइंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं इसके। इसरो जो है वो कार्टोसाट और ओशन सैट सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करता था, बट अब जो नेमिंग उन्होंने सिस्टम कर दिया है वो EOS कर दिया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, 2, 3 ऐसे जो है वो अब से नेमिंग सिस्टम किया जा रहा है। टोटल जो 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं उसमें से 21 जो है इंडिया में, जो इसरो की है, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अब हम PSLV के बारे में भी देखते हैं। इंडिजिनसली डेवलप्ड जो है लॉन्च सिस्टम है, 4 स्टेज सिस्टम है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल रॉकेट स्टेजेस होती हैं। 1750 किलो का ये पेलोड लेके जा सकता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में, और लगभग 48 इंडियन सैटेलाइट्स और 209 सैटेलाइट्स जो है अब्रॉड के कस्टमर्स के लिए अभी तक ये लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो है वो भी इसी ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर 8 प्रोजेक्ट्स जो है उनको मंजूरी मिल गई है। तो बेसिकली नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर 8 प्रोजेक्ट्स जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। तो पहला तो प्रोजेक्ट है रिजुविनेशन ऑफ रिवर हिंदन, तो जो कि आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। फिर 7 घाट बनाए जाएंगे प्रयागराज में। तो 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स बिहार और मध्य प्रदेश में। हरिद्वार में अखंड परम धाम घाट भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर इनको मंजूरी दे दी गई है। नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का प्रोग्राम है। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2014 में अनाउंस किया गया था, पॉल्यूशन रोकने के लिए और रिवर गंगा के कंजर्वेशन और रिजुविनेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेशनल लेवल पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। स्टेट लेवल पर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। NMCG जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन विंग है, जैसे मैंने आपको बताया 2016 में उसको जो है क्रिएट किया गया था। 3 टियर मैकेनिज्म के थ्रू इसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाई लेवल टास्क फोर्स जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, स्टेट लेवल कमेटी जिसको चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करते हैं। यहाँ पर कुछ की अचीवमेंट जो है वो इस प्रोग्राम की मेंशन की गई है। इसको आप एक बार ऐसे ही देख सकते हो अपने आप, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिटी नेचर चैलेंज। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 30 इंडियन सिटीज़ जो है वो सिटी नेचर चैलेंज में जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं। बेसिकली एक ऐप बेस्ड कॉम्पिटिशन होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। इस इनिशिएटिव के अंदर पार्टिसिपेंट्स आई नेचुरलिस्ट ऐप का इस्तेमाल करते हुए नेचुरल फ्लोरा और फौना की फ़ोटोज़ क्लिक कर सकेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर आइडेंटिफाई करेगी कि वो कौन सी स्पीशीज़ है। ये डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और नेचुरलिस्ट स्कूल, ये तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं या इस इनिशिएटिव को चला रहे हैं। पहले इसको US में 2016 में चलाया गया था, अब इसको इंडिया में भी चलाया जा रहा है। अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है क्या? पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो 1883 से काम कर रही है। इवन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है के साथ भी काम करती है मिलके, और इसको हमने साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है वो डेजिग्नेशन दिया हुआ है। अब ये डेजिग्नेशन क्या होता है? बेसिकली एक रिकॉग्निशन स्कीम है ये, जिसमें हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो नॉन कमर्शियल सेक्टर में काम कर रही हैं उनकी एक्टिविटीज़ प्रमोट करने के लिए हम उनको जो है रिकॉग्निशन देते हैं, ताकि जो है उसकी वजह से जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी पे और ज़्यादा काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिविल यूनियन एंड कंसेप्ट ऑफ मैरिज। सोशल इश्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के लिए जो है वो
हेयरिंग्स चल रही हैं। तो इसी में ही एक प्रपोज़ल रखा गया है कि क्या हम सिविल यूनियन का कंसेप्ट जो है इस सेम सेक्स मैरिज के कंटेक्स्ट में हम ला सकते हैं। तो सिविल यूनियन क्या होता है? सिविल यूनियन स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही एक प्रोविज़न है जिसमें आप यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, चाहे वो किसी भी सेक्स के हों, चाहे किसी भी कास्ट के हों, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, चाहे किसी भी नेशनैलिटी को हों, उनको हम लीगली रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं कि हाँ, ये दो लोग जो हैं इनका यूनियन लीगल है। ठीक है? तो अब इसमें फॉर्मल लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो बिना किसी ट्रेडिशनल रिचुअल्स के। ठीक है? इसमें एम्प्लॉयमेंट, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, पेरेंटल राइट्स, ये जो है आप देने को तैयार हो जाते हो। और इसमें अगर हम मैरिज से इसको हम कंपेयर करें तो सिविल यूनियन तो एक लीगल एग्रीमेंट है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है और उनको कुछ राइट्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं मैरिज के, बट मैरिज तो एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है। ठीक है? सिविल यूनियन में इनहेरिटेंस राइट्स, टैक्स बेनिफिट्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सारे जो है राइट्स जो है जनरली कपल्स को दिए जाते हैं। लेकिन ये मैरिज से डिफरेंट कैसे है? रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स जो है वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही, तो सिर्फ एक लीगल राइट है। सिविल यूनियंस जो है जनरली वो सिर्फ सेम सेक्स कपल्स को दिया जाता है और सिविल यूनियन जो है सारी स्टेट्स ज़रूरी नहीं है कि रिकॉग्नाइज़ करें। अब जैसे आप सऊदी अरेबिया में जाओगे तो वहाँ पर सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा अगर सेम सेक्स कपल है तो। लेकिन मैरिज को लगभग हर कंट्री में ही रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इसीलिए डिफरेंसेस हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स में भी। अब कौन सी कंट्रीज सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज़ करती है? यूएस रिकॉग्नाइज़ करता है, फिर ब्राज़ील, यूरुग्वे, एंडोरा, चिले, ऐसी कंट्रीज़ जो है वो राइट ऑफ सेम सेक्स कपल्स को टू एंटर इनटू सिविल यूनियंस उसको भी रिकॉग्नाइज़ करती हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गोवा तामनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट लैंड जो है उसका डाइवर्जन कर सकती है गोवा तामनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ये एक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा इसको 2015 में जो है वो एनविजन किया गया था और इसमें एडिशनल सोर्स ऑफ पावर हम दे रहे हैं स्टेट ऑफ गोवा को, जो करंटली अभी सिर्फ वेस्टर्न ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट है। 400 केवी का ट्रांसमिशन लाइन जो है सानगोड गोवा से जो है कर्नाटका के बॉर्डर तक बनाई जाएगी और ये प्रोजेक्ट पूरा गोवा, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में स्प्रेड है। हैवी डेंस फॉरेस्ट से क्योंकि ये पास हो रहा है वेस्टर्न घाट्स में, तो इसलिए जो है ये डेंस फॉरेस्ट को जो है वो नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए कन्वर्ट करने की या डाइवर्ट करने की जो है ज़रूरत पड़ी है। ठीक है? अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए ये प्रोहिबिशन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल्स बना सकती है कि इस एक्ट को कैसे चलाया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है और एक एडवाइजरी कमेटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट। गवर्नेंस के लिए, सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड गवर्नमेंट ने नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 2001 को जो है वो रिपील कर दिया है और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली थी लोकल इलेक्शंस कराने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ की, वो अब कैंसिल हो गई है ऑफकोर्स उसी की वजह से। ठीक है? क्योंकि अब वो एक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो है पूरा मुद्दा क्या है, इसको हम रीजन ट्रेस कर रहे हैं आर्टिकल 371A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 371A एक स्पेशल प्रोविज़न है जो स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए बनाया गया है। 13th अमेंडमेंट करके 1962 में ये प्रोविज़न जो है वो डाला गया था सेफ गार्ड देने के लिए यूनिक सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज को। ठीक है? तो गवर्नर ऑफ जो नागालैंड है उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, डेवलपमेंट की भी। गवर्नर को हर मैटर में कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट हो, चाहे कोई कैंडिडेट्स की एडमिशन हो रही हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नागालैंड में, तो गवर्नर को कंसल्ट किए बिना जो है वो नहीं हो सकता। बेसिकली एडमिशन प्रोसीजर भी जो है वो गवर्नर की कंसल्टेशन से ही डिसाइड होता है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है नागालैंड का, उनके पास लॉज इनैक्ट करने की पावर है, इवन जो है ओनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड को, और कस्टमरी लॉज और प्रैक्टिस ऑफ नागा ट्राइब्स को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया
कोई भी ऐसा लॉ जो कि रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा पीपल को जो है वो चेंज कर रहा है, वो पार्लियामेंट जो है वो नहीं बना सकती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली हम उनके हिस्ट्री, कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्पेशल सेफ गार्ड उनको दिया गया है। लेकिन अब ये अर्बन लोकल बॉडी पोल्स को अपोज क्यों किया जा रहा है? नागालैंड अकेली ऐसी स्टेट है इंडिया में जहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ में विमेन को रिजर्वेशन नहीं है सीट्स की। वरना तो आपको पता ही है 74th अमेंडमेंट एक्ट में 33% रिजर्वेशन जो है विमेन को दी जाती है सीट्स को, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए। लेकिन आर्टिकल 371A की प्रोविजंस को क्योंकि ये वायलेट करता है, उनके कल्चरल और उनकी जो है सोशल जो है हेरिटेज को जो है ये वायलेट करता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए वहाँ पर ये प्रोविज़न को जो है जब भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर इस चीज़ को अपोज किया जाता है। क्या कभी पहले वहाँ नागालैंड में लोकल बॉडी पोल्स हुए हैं? यस ऑफ कोर्स। 2001 के एक्ट के हिसाब से 2004 में जो है बिना किसी रिजर्वेशन ऑफ विमेन, बिना किसी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन के ये पोल्स किए गए थे। स्टेट गवर्नमेंट ने फिर 2006 में इस एक्ट को दोबारा अमेंड किया और 33% रिजर्वेशन लाने की कोशिश की, लेकिन वाइड स्प्रेड अपोजिशन हुआ और फिर इन पोल्स को 2009 में कैंसिल करना पड़ा। 2012 में वहाँ की स्टेट असेंबली ने नागालैंड को आर्टिकल 243T ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 33% रिजर्वेशन दे रहा है, उससे एग्जाम्प्ट करने के लिए बिल पास कर दिया। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और इस रेजोल्यूशन को नवंबर 2016 में रिवोक किया गया और दोबारा से ये 33% रिजर्वेशन लाने की बात की गई। फिर दोबारा से ऑफकोर्स वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन हुआ। गवर्नमेंट ने इसीलिए फिर 2017 में जो है उस इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। तो बेसिकली ये मुद्दा बार बार उठता रहता है और अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में जो करंट नागालैंड गवर्नमेंट है, उन्होंने दोबारा से ये अर्बन लोकल बॉडीज़ पोल कराने की कोशिश की थी, लेकिन ट्राइबल बॉडीज़ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि हम वो इस पोल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर विमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रेशर में को सुकम करी और उन्होंने दोबारा से म्यूनिसिपल एक्ट को रिपील कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PTP-NRE स्कीम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन स्कीम जो है वो मणिपुर में लॉन्च की है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बेनिफिट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी उनको। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में ये स्कीम एप्लीकेबल होगी और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो है ट्राइबल आर्टिसंस जो है उनको एम्पैनल किया जाएगा और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट का काम करेगी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो प्रोवाइड किया करवाए जाएंगे ट्राइबल आर्टिसंस को, वो इंडिया पोस्ट ही करने वाली है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गालापागोस आइलैंड। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एक और इन्वायरमेंट के लिए भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन रिसेंटली एक अननोन कोरल रीफ पर गया है जो कि इक्वेडर के गैलापागोस आइलैंड के पास में पड़ता है। पैसिफिक ओशन में इसकी लोकेशन है, इक्वेडोरियन कोस्ट पर, और ये बोथ साइड ऑफ इक्वेटर पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो है सी फ्लोर से जो है ये एमर्ज हो रहा है ये आइलैंड और अबव सी लेवल तक आ रहा है। यहाँ पर इस रीजन पर नाज़का, कोकोस और पैसिफिक प्लेट्स मिलती हैं जो कि 3 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। बहुत ही यंग है गैलापागोस आइलैंड और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है। अब कोरल रीफ्स आपको पता है मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं जूसेंथले के साथ। एल्गी जो है ये जूसेंथले ये इनको फूड और न्यूट्रिएंट्स देती है और कोरल्स रिटर्न में इस एल्गी को होम और की न्यूट्रिएंट्स देते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल पंचायत अवार्ड्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेशनल पंचायत अवार्ड दिए हैं और बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत को जो है जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने की तरफ जो है अपने अच्छे कदम उठाए हैं उनको रिकग्नाइज़ किया गया है। पहली बार ये अवार्ड्स 2011 में दिए गए थे। अलग अलग अवार्ड्स की कैटेगरी यहाँ पर जो है वो मेंशन की गई है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स। और इसी मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने GS निर्णय
नेविगेट इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत डिसीजंस नाम की मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, ताकि ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डिस्कशन के टाइम पर, वो इजीली प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेबी ने रिसेंटली एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया है लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए, ताकि वो डिस्प्यूट्स और क्लेम्स जो है वो सेटल कर सके। तो अब जो है क्लियरिंग और सेटलमेंट करती है ये लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी क्लियरिंग का काम बेसिकली करती हैं। तो क्लियरिंग मेंबर्स में अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो कंसीलिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया है। जो इसको डिसीजन होगा आर्बिट्रेशन पैनल का वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। अगर फिर भी जो है सेटिस्फाइड नहीं है पार्टीज़, तो ऑफ कोर्स फिर उनको जो है नॉर्मल जो आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के जो प्रोविजंस के अंडर उनको लीगल केस आगे परस्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं U13 हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 100 मेगावाट का ऊही 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसको अगले साल तक फंक्शनल करने के लिए कहा है। तो ये राणा नेरी खार रिवर जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर वाटर जो स्टेज 2 का है उसको डाइवर्ट किया जाएगा और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज़ की ऑलमोस्ट 100 मेगावाट्स है। ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको जो है वो ओन और ऑपरेट करेगी, और इसकी जो टरबाइन है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जनरेट की है। ठीक है, तो ब्यास वैली कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही 2003 से रजिस्टर्ड है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Singaporean Earth Observation Satellite. This topic is important for your science and tech section. So ISRO will soon launch this TeleOS satellite of Singapore from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota on 22nd April. So this will be launched using the Polar Satellite Launch Vehicle, and the PSLV will carry this satellite into the sun synchronous orbit, and this will be the third commercial launch for ISRO this year. So what are these Earth observation satellites? They are basically Earth remote sensing satellites, and of course they are meant to observe the planet Earth from space. The first such Earth observation satellite was Sputnik 1, which was launched by the Soviet Union in 1957, and these satellites are placed in the topmost layer of Earth's atmosphere called the ionosphere. So basically they are about 500 to 600 kilometers away from the surface of Earth. What are their applications? So of course they are used for various purposes like environmental monitoring, cartography, navigation, even for military purpose like spying and communication. These satellites can be used. ISRO operates 53 operational satellites, and 21 of them are Earth observation satellites. Initially we were using namings like Cartosat for topography and mapping satellites, land topography and mapping satellites, OceanSat for observation over sea satellites. But since November 2020, ISRO has adopted the EOS-1, EOS-2, EOS-3 names. This new naming system has been adopted for ease of understanding. Okay, so what is Polar Satellite Launch Vehicle? It's an indigenously developed expandable launch system of the ISRO, and it has 4-stage system combining the solid and liquid fuel rocket stages, and this can take up to 1750 kg of payload into the sun synchronous polar orbits of 600 kilometer altitude. It has till now launched almost 48 Indian satellites and 209 satellites for customers from abroad, and even the Chandrayaan-1 and Mars orbiter spacecraft in 2013 was launched by this PSLV only. So the next topic is Namami Gange program. This topic is important for your governance section and environment section both. Jal Shakti Ministries National Mission for Clean Ganga has cleared 8 projects under the Namami Gange program. First, of course, is the rejuvenation of river Hindon, which is a tributary of Yamuna. Second is the development of 7 ghats in Prayagraj.
Two more sewerage treatment projects have also been approved for Bihar and Madhya Pradesh respectively. And another ghat development for Haridwar, where Akhand Param Dham Ghat will be constructed, has also been approved. So, what is Namami Gange program? It's an integrated conservation mission which was launched in 2014 with a budget outlay of 20,000 crore. It is administered by Ministry of Jal Shakti, and the aim is to ensure abatement of pollution from Ganga and conservation and rejuvenation of Ganga river. So for that, implementation is being done by National Mission for Clean Ganga under the Jal Shakti Ministry and state counterpart organizations like the State Program Management Groups. NMCG, of course, this is the implementation wing which was created in 2016, and the implementation is being done at the three-tier mechanism. High level task force is chaired by cabinet secretary at the national level. State level committees are chaired by the chief secretary at the state level, and the district level committees are chaired by the district magistrate. So certain key achievements of this program are mentioned here. So for your mains answer writing practice, you can read them. So the next topic is City Nature Challenge. This topic is important for your environment section. So 30 Indian states are set to participate in this City Nature Challenge, under which participants will be using this iNaturalist app, and they would be able to click and upload a photo of natural flora and fauna, and artificial intelligence would then suggest the species name for which the photo has been clicked. This will generate a database which will be available for scientists and researchers who can use it to research different plant and animal species. So this project is of Bombay Natural History Society, a Worldwide Fund for Nature, India, and the Naturalist School. This was first organized in US in 2016, and now it is being organized in India also. So what is Bombay Natural History Society? It's a pan-India wildlife research organization which is working for the conservation of nature since 1883. It is also the partner of BirdLife International in India, and has been designated as the scientific and industrial research organization by the Department of Science and Technology. So what does this recognition mean? So this basically brings together the voluntary organizations who are working in the non-commercial sector so that their activities can be promoted and their science and industrial research can be promoted, of course. So the next topic is civil union and concept of marriage. This topic is important for your social issues. So a 5-judge bench of Supreme Court is hearing a batch of petitions regarding the legal recognition of same-sex marriage. So an alternative has been given that we should recognize these same-sex marriages as civil unions. So what is a civil union and how is it different from the marriage concept? So civil union is basically under the Special Marriage Act is a legally recognized union between two individuals regardless of their sex, caste, religion or nationality. So basically they give this union gives a formal legally binding relationship without going into the traditional rituals of the religion. So it gives certain rights like employment, inheritance, property and parental rights. But there are of course difference between marriage and civil union. Marriage is a very broad concept, and civil union is just a legal agreement between two individuals, so that certain rights and benefits of a marriage can be given to them, like inheritance rights, tax benefits, access to healthcare, etc. But it is of course different from marriage because marriage involves religious or cultural beliefs, but civil union is just legal in character. Civil unions are available to same-sex couples also, and civil union may not be recognized in all countries, but of course marriage is generally recognized by all countries. So which countries recognize civil unions? US, Brazil, Uruguay, Andorra, Chile. These are certain countries which recognize the concept of civil unions for same-sex couples. So the next topic is Goa Tamnar transmission project, which is important for your environment and economy sections. Central Empowered Committee appointed by the Supreme Court has clarified that Karnataka government can seek a diversion of forest land under the Forest Conservation Act for the implementation of this project. Of course, this project is an interstate transmission system project envisaged by the Ministry of Power in 2015, and this will provide additional source of power for the state of Goa, which is currently dependent on Western grid. So it will involve 400 kV transmission line from Sangod in Goa to Karnataka border, so that
Goa's peak electricity demand can be met. This project will be spread across state of Goa, Karnataka and Chhattisgarh, and it is passing through heavy dense forests of Western Ghats in Goa and Karnataka. What is this Forest Conservation Act of 1980? It is an act of parliament which is ensuring conservation of forests and their resources. So it empowers the central government to make rules for carrying out the provisions of this act, and any person who is aggrieved can file an appeal to the National Green Tribunal. Central government, of course, can constitute advisory committee to advise the government on the uh, measures that it can take to conserve forests, and basically it prohibits the felling of forest for any non-forestry use without clearing from the central government. So the next topic is Nagaland Municipal Act. This topic is important for your governance section. Recently, Nagaland government has repealed the Nagaland Municipal Act of 2001. So basically, it has cancelled the State Election Commission's notification of holding elections to Nagaland's urban local bodies with 33% of seats reserved for women. This has been a constant struggle for the people of Nagaland. This has been a major issue. It props up just every 2-3 years, and then it causes troubles there. So for that, we have to understand what is the status of Nagaland. So for that, of course, Article 371A of the Constitution can throw some light. So this is a special safeguard meant for state of Nagaland. It was introduced by 13th amendment to the Constitution. So this is meant to provide a special safeguard for the unique social and cultural practices of the Naga people. So it also ensures equitable development of the state of Nagaland. Under this provision, the governor of Nagaland has special responsibility to ensure development of state with respect to law and order and administration of justice, and governor must be consulted on all matters, even to the extent of appointment of civil servants and the admission procedure for selection of candidates to the educational institutions in Nagaland. State legislature has been empowered to make laws with respect to ownership and transfer of land and customary laws and practices of Naga tribes. And of course, the Parliament of India is barred from enacting any such law which can affect the religious and social practices of Naga people. Using this Article 371A, there has been a special opposition to the concept of a reservation of women in local bodies election. So Nagaland is currently the only state where this urban local body seats are not reserved for women, of course, because it has this special space safeguard using this Article 371A. So parliamentary laws cannot automatically apply to Nagaland. So many tribal and urban organizations have opposed this 33% reservation of seats for women. They argue that it violates the special safeguards meant for Nagaland. So has Nagaland ever held such polls? Yes, in 2004, local body polls were held without reservation for women. But in 2006, the government of the state tried to bring 33% reservation, but there was widespread opposition, and the government was forced to relent in 2009. Similarly, in 2012, the State Assembly passed a resolution that Nagaland should be exempted from the Article 243 of the Constitution, 243T of the Constitution, which mandates 33% reservation for women. And this resolution was revoked in November 2016. So again, there was widespread opposition. So the government relented again, and in 2017, this provision was made null and void. The election was made null and void. So why did the government decide on urban local bodies poll this time? Under pressure from Supreme Court, the current Nagaland government laid the ground for holding these polls with, of course, reservation. But tribal bodies and civil society organizations decided to boycott the poll. So the government succumbed to public pressure, and of course, they had to repeal the Municipal Act.
So the next topic is PTP NRE scheme. This topic is important for your economy section. So Tribal Affairs Minister has recently launched this marketing and logistics development for promotion of tribal products from Northeastern region scheme in Manipur. It is of course meant to benefit the scheduled tribes of Northeastern region and to strengthen the livelihood opportunities for them. It will apply to states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim. And this will, of course, as part of this scheme, there will be empanelment of tribal artisans from the northeastern region. So NEH, HDC, and India Post will be the implementing partners. India Post will be providing the logistics support in case to meet the goals of the scheme. So the next topic is Galapagos Island. This topic is important for international relations and environment topics both. So recently, a scientific expedition has discovered a previously unknown coral, which is near Ecuador's Galapagos Island. And Galapagos Island situated in Pacific Ocean near the Ecuadorian coast, and it is distributed on either side of the equator. So it begins at the sea floor and it emerges above the sea level. It is located at the confluence of three major tectonic plates, Nazca, Scocos, and Pacific Plate, and they are very young with largest and youngest islands, and it has been designated as a UNESCO World Heritage Site in 1978. Coral reefs, these are marine invertebrates. They share a symbiotic relationship with the algae called the zooxanthellae. Algae provides them with food and nutrients, and corals provide algae a home and key nutrients. So the next topic is National Panchayat Awards. This topic is important for your governance section. President of India has recently presented the National Panchayat Awards, and these awards are given to best performing panchayats who have strived to attain the sustainable development goals. These awards are being given annually since 2011. Certain kinds of names of awards are mentioned here. You do not need to remember them. But during this event, Union Minister of Rural Development also launched this GS Nirnay mobile application, the Navigate, Innovate and Resolve Panchayat Decisions application, which will provide easy access to critical information so that discussions during a Gram Sabha can be made more transparent and efficient. So the next topic is Limited Purpose Clearing Corporation. This topic is important for our economy section. So SEBI has recently put in place a dispute resolution mechanism for Limited Purpose Clearing Corporation, which will, of course, Limited Purpose Clearing Corporation is an activity undertakes the activity of clearing and settlement of repo transactions. So it enables settlement by this dispute mechanism will enable settlement by conciliation and or by the arbitration panel. The decision will be final and binding, but in case the members are not happy with the decision of this tribunal, they would have the option to take the matters into the court under the Payment and Settlement Act of 2007. So the next topic is UI 3 hydro power project. So this topic is important for your economy section. Himachal Pradesh CM has recently directed officials that this 100 megawatt hydropower project should be made functional by May next year. This is located on the Rana Neri Khad river of Mandi district of Himachal Pradesh. So the project involves diversion of tail water from the stage 2 Bassi area of Neri Khad and Rana Khad, and this will have an installed capacity of 100 megawatts. This power plant is owned and operated by Beas Valley Power Corporation Limited, and the turbine has been made by the BHEL, that is the Bharat Heavy Electricals Limited. So what is Beas Valley Power Corporation Limited? It's a private company incorporated in 2003. It is in fact classified as a state government company, and it is registered at the Registrar of Companies, Himachal Pradesh. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.